Good day everyone. You are connected to your online English class. Students, today we are going to go through worksheet number 43 related to your book of Bravia, having the heading articles. In part A, fill in the blanks with suitable articles a and the. We have to make appropriate use of the given articles in the following blanks. So let us start. At very first place it is dash orange. Now we are having before after blank there is vowel, so we will go with it is an orange. Mahatma was a truthful boy even as dash student. Now after blank we are having a consonant, so even as a student. Next is she is dash honest woman. Now class, after blank we are having h, but we know that h before o से पहले जो h होता है it remains silent, so we will consider with o, honest, and moreover o is a vowel and it is giving a vowelic sound. o अपनी ही sound दे रहा है, vowelic sound it is giving. So she is an honest woman. Next is she drives at 60 kilometers dash hour. Similar cases here, 60 kilometers an hour. Next is don't be in such a hurry. I met dash one-legged man yesterday. Here we are having vowel, but when we pronunciate it, it is not giving vowelic sound, it is giving one. So we are having the sound of a consonant. V stands for V. So I met a one-legged man yesterday. In part B, fill in the blanks with a, an or the. Sound is also dash form of energy. Sound is also a form of energy. Computer is dash electronic device. Computer is an electronic device because we are having a vowel giving the vowelic sound, electronic. Once upon a time there lived dash king. Once upon a time there lived a king. एक बार की बात है, वहाँ एक राजा रहता था. He is dash best boy of the class. Now after blank we are having superlative degree, so we will apply the article the. He is the best boy of the class. Now let's move towards part C. Here insert appropriate articles in the blanks. We have to make use of articles a and the. We have all seen dash rainbow in dash sky. So we all have seen a rainbow. एक रेनबो हमने देखा था, कॉन्सोनेंटल साउंड इज देयर, इन द स्काई. वी नो दैट विद यूनिक कॉमन नाउन्स सन, अर्थ, मून, स्टार्स वी ऑलवेज अप्लाई द, एंड दे आर वन इन. नेक्स्ट इज dash rainbow appears after the rain is over. Now the rainbow, now here we have applied a rainbow because we are giving the first information about the rainbow, that we have all seen a rainbow in the sky, but again we are giving the information of the same rainbow. The rainbow appears after the rain is over. Rainbow कब आया था? जब रेन ख़त्म हो गई थी. and it always faces dash sun, it always faces the sun. Now class, here notice that we are again talking about the same rainbow, so we are making it specialized. At number B part, we are having dash lark built a nest in dash cornfield and lived in it with her young ones. So a lark built a nest in a cornfield, एक मकई का खेत है उसमें बनाया a cornfield, lived in it with her young ones, जहाँ पर वो अपने बच्चों के साथ रहती थी. Again dash little larks were too young to fly.
नाउ द लिटल लार्क्स, अब जो छोटे बच्चे थे, जो यंग वंस थे, वो इतने छोटे थे दैट दे कुड नॉट फ्लाई. अच्छा, नंबर 4, डैश मदर लार्क यूज टू गो आउट एवरी मॉर्निंग टू ब्रिंग फूड. अब अगेन द मदर लार्क, जो मदर लार्क थी वो जाती थी रोज़ सुबह अपने बच्चों के लिए, अपने यंग वंस के लिए खाना लेने के लिए. पार्ट सी इज़ हेयर. डैश रिमोट ब्लॉक इन वेस्ट त्रिपुरा with its mixed population has in dash true way. So the remote block. Now हम किसकी बात कर रहे हैं? The remote block, वो ब्लॉक जो बिल्कुल रिमोट है, बिल्कुल दूर दराज अकेला है. In West Tripura with its mixed population has in dash true ways. So we are having a true way made dash large proportion of its population. So in C part we will have made a large population of its made a large proportion of its population. Literate. This has been done under dash Prabhaman Shiksha Karma Suchi project. So here we are having this has been done under, अब किसके अंडर में ये काम कर रहा है? अंडर द. नाउ द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज गिवन, सो वी विल गो विद द आर्टिकल द. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, प्रभामन शिक्षा कर्मा सूची प्रोजेक्ट ऑफ डैश स्टेट लिटरेसी मिशन, ऑफ द स्टेट लिटरेसी मिशन. यू विल अप्लाई द आर्टिकल द हेयर. Today this block Jirania boast of dash literacy rate of 97%, of a literacy rate of 97%. Here we are having the D part. Of course all dash credit for this should go to dash women. Now of course all the credit, आप सभी क्रेडिट की बात कर रहे हैं. All the credit for this should go to dash women. किसको जाना चाहिए क्रेडिट? आप वीमेन को क्रेडिट दे रहे हैं. गो टू द वीमेन, औरतों को आप क्रेडिट दे रहे हैं, लेडीज़ को. वी हैव वर्कड टायरलेसली, हु हैव वर्कड टायरलेसली फॉर ओवर डैश डिकेड एज वॉलंटियर्स ऑफ डैश प्रोजेक्ट अमंग डैश वेरियस कम्युनिटीज़ ऑफ dash region to highlight dash importance of literacy. Now who have worked tirelessly for over, अब यहाँ पर आएगा for over a decade as volunteers, जिन्होंने एक दशक तक मीन्स 10 years तक volunteers अपनी इच्छा से काम किया of dash project. Now you are having here article the project, एक खास प्रोजेक्ट पर काम किया. द प्रोजेक्ट अमंग द वेरियस, कहाँ पर काम किया, किन के बीच में काम किया? वेरियस कम्युनिटीज़ के ऑफ डैश रीजन, और किस रीजन में काम किया? यहाँ पर भी ऑफ द रीजन टू हाईलाइट, क्या हाईलाइट किया उन्होंने? टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिटरेसी. ओके, अच्छा. Part E we are having, if dash mother is not literate. Now if a mother is not literate, अगर कोई मदर पढ़ी लिखी नहीं है, then her children will also remain illiterate, तो उसके बच्चे भी अनपढ़ रह जाएंगे. Without education dash person, a person एक इंसान is as good as blind, एक इंसान एक अंधे की तरह है. They took this प्रोजेक्ट एज अ चैलेंज, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक चैलेंज, एक चुनौती के रूप में लिया था. दे गैदर्ड डैश विलेज, दे गैदर्ड द विलेज वीमेन, गांव की औरतों को इकट्ठा किया. एंड टॉट दैम, दे हैव बीन इन्वॉल्व विद डैश प्रोजेक्ट, इन्वॉल्व विद द प्रोजेक्ट, एक खास प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व हुए थे. फॉर अ लॉन्ग टाइम टू अचीव देयर टारगेट, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए वो एक प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व हुए थे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए. सो क्लासेस, नाउ वी आर गोइंग टू सम अप अवर वीडियो हेयर.
We have done part A to part E. I hope that these are quite clear to you. Go through them once again and try to do by your own. Thank you class. Good.